Good evening, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. So I hope that my audio. Yes, so the students have joined. Yes, guys. So let's start the session. And before starting the session, let me introduce myself. So this is E for ESE. So those who are preparing for the ESE can look for this. Okay, so don't forget to join my Telegram group because here I update the PDF and I also share my class link and upcoming classes and also the daily questions to improve your concepts. And UPSC ESE 2023 results are out and we are providing the free mock test, and for that you can share your result in the link given in the description. And don't forget to download our BYJU'S Exam Prep app, because in the app, when you participate in the quiz, there will be a leaderboard we create, and the leaderboard you can see how the students are participating and how much they are scoring. So there are number of questions that we ask, and you can answer them, and you can see that how other students are doing. Okay, so let's start with the first question of the IISc 202, maybe from the topic Fourier transform. So, like yesterday, I will provide you some time limit to solve the questions. So, after that, I will discuss the question with you. Yes, come on, guys, answer this question.
So yes, the time is over now, and let's start the discussion of this particular question. So the frequency response of h of omega, h of t is given. So what will be the frequency response? The frequency response, you can say that it is nothing but the Fourier transform of this. So to calculate the frequency response, you can calculate the Fourier transform of this signal, which is integration from 0 to infinity, because it is given as ut e to the power minus 2t e to the power minus j omega t dt. So this is nothing but 0 to infinite e to the power. If I take minus common, then it is 2 plus j omega into t dt, and when you integrate it, you will get e to the power minus 2 plus j omega into t divided by 2 plus j omega. So limit is from 0 to infinite. With minus sign it is, okay, there is a minus sign also. So outside I am writing. So when you put infinity, you will get 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus j omega. So answer will be option number C. Answer will be option number C. Yes. So 1 upon 2 plus j omega would be the right answer for this frequency response. Now, to link with this same question, it is asking that what will be the output of this system to the sinusoidal input x of t equal to 2 cos 2t. So like the previous question you solved, let's try to solve this question also. This is the link with the previous question, and I'm giving you 2 minutes time for C. Yes, Lakshman. So now continuing with the same question, है ना, सेम क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन. D option not visible. Wait, let me remove this. Now I hope that you are able to see the D option also. So what is the answer you got? लक्ष्मण. ठीक है, देखो आपके पास एच ऑफ ओमेगा आ चुका था. एच ऑफ ओमेगा हमारा आ चुका था, और ये था हमारे पास 1/2 प्लस जे ओमेगा. ठीक है. और एच ऑफ ओमेगा जो होता है वो वाई ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई एक्स ऑफ ओमेगा होता है. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के उसमें चले जाता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, ट्राई करते रहो, है ना. तो मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखता हूँ. देखो, एच ऑफ एस लिख सकते हैं 1/s+2. ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो y ऑफ s डिवाइडेड बाय x ऑफ s. हमको आउटपुट निकालना है, मतलब y ऑफ s निकालना है. तो y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s डिवाइड बाय s+2.
2। तो x ऑफ s कितना है? x ऑफ s हम लोगों ने बोला है इस क्वेश्चन में आपने इनपुट जो दिया है वो साइनसॉइडल इनपुट दिया है। तो x ऑफ t मुझे गिवन है 2 cos 2t। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s अपॉन s प्लस 2 एंड s स्क्वायर प्लस 4। ठीक। अब इसके बाद हम इसका सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो ए एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 लिख लेते हैं। और ये हम लोग किसको कर रहे हैं? 2s अपॉन s प्लस 2 एंड s स्क्वायर प्लस 4 का पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, c अपॉन s प्लस 2। This is 2s and as plus b multiplied with s plus 2 plus c s square plus 4. So at s equal to -2 अगर देखें तो -4 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 8c। तो c की वैल्यू आ गई -1/2, ये एक वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब आप देख लो एट s इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू b इंटू 2, ओके, प्लस 4 इंटू c। सो 2b इक्वल टू -4c एंड -4 -1/2, ये हो जाएगा 2। सो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो b इज इक्वल टू 1 आया। देखो यही आ रहा है क्या? बताओ, यहां तक सही है? अब a की वैल्यू निकालो, कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट कर लो। c की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितना? c आ रहा है लक्ष्मण आपका। ओके, देख लेते हैं। तो एट s इक्वल टू 1 कर लेते हैं, है ना। तो s इक्वल टू 1 कर लेते हैं। 2 इक्वल टू यहां से आ जाएगा a प्लस बी इंटू 3 प्लस 5 इंटू सी। 2 a b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 3 और 3 लिख लेते हैं, और 5c c की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से आ गया -1 और ये आ गया +5/2 इक्वल टू 3a। सो a इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो y ऑफ s, तो y ऑफ s जो आएगा, यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। लेट्स राइट नाउ y ऑफ s। सो y ऑफ s इज a की वैल्यू 1/2 आया, प्लस b का वैल्यू 1 आया। तो ए एस प्लस बी डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 था, एस स्क्वायर प्लस 4। सी की वैल्यू -1/2 आई, डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 था। ठीक है। चलो, अब इसका इनवर्स लेना है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, है ना। 1/2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 -1/2 1 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2। ये है y ऑफ s। नाउ कैलकुलेट द y ऑफ t। तो y ऑफ t कितना हो गया? 1/2, ये cos का ही दिख रहा है, तो cos ऑफ 2t दिखेगा। ये साइन दिख रहा है, तो साइन ऑफ 2t दिख रहा है। ठीक है। और ये तो 1/2 e टू द पावर -2t दिख रहा है, ये y ऑफ t दिख रहा है। ठीक है। ये 1/2 इसी में मल्टीप्लाई है, साइन में भी 1/2 आएगा क्या? नहीं ना। हम्म ठीक है। अगर मैं 1/2 कॉमन निकालता हूं यहां से, तो अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग हो गया ना। साइन 2t लिखने के पहले यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी करना पड़ेगा। तो चलो 2 1/2 ही आ जाएगा। जब एक स्टेप और लिखता हूँ, यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गया। इक्वल टू 1/2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी होना चाहिए यहाँ पे। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिवीजन करना पड़ेगा, तभी वो साइन में कन्वर्ट होगा। -1/2 एंड 1/s+2, ये। ठीक है। तो इसमें 1/2 कॉमन निकलेगा, फिर इसका इनवर्स फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, तब ये cos 2t और यहाँ से ये sin 2t में कन्वर्ट होगा। ये b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा साइन।
-1/2 e⁻²। अब इसको अगर हम लोग और एक्सपांड करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ √/a² + b² मतलब √2 एंड देन cos ऑफ 2t माइनस tan−1 ये इसका फॉर्मूला हो गया cos का, cos थीटा प्लस sin थीटा का e⁻²। नाउ एट स्टडी स्टेट अगर आपको निकालना है y इंफिनिटी तो ये आ जाएगा 1/√2 एंड cos ऑफ 2t माइनस π/4 और ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास आ रहा है 2 का पावर -0.5 एंड cos ऑफ 2t माइनस π/4। देखें कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? Yes. So this is the answer. Option number D is matching. लक्ष्मण देखो ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग 2 to the power -0.5 cos of 2t माइनस π/4 ये जो है वो π/4 ही है, तो डी ऑप्शन इज मैचिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस वन नाउ। यस, तो टाइम इज ओवर नाउ गाइस। हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लक्ष्मण सिग्नम फंक्शन की तरह लग रहा है। ओके लक्ष्मण, सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस साइन पाई टी कन्वॉल्व विद साइन पाई टी। ओके, सो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, है ना। आपको बोल रहा है कि साइन साइन पाई टी, ठीक है, डिवाइड बाय पाई टी का कन्वोल्यूशन हो रहा है। सो एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन पाई टी डिवाइड बाय पाई टी का कन्वोल्यूशन हो रहा है साइन पाई टी डिवाइड बाय पाई टी के साथ। ठीक है, अब अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म या कोई भी अदर ट्रांसफॉर्म लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट करता हूं तो जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं साइन पाई टी अपन पाई टी ही है ना, ठीक है, नहीं साइन पाई टी नहीं है, पाई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि 1/पाई स्क्वायर को तो बाहर ले लो आप। ठीक है, तो 1/पाई स्क्वायर को हम बाहर लिए, तो ये बन गया साइन टी अपॉन टी। ठीक है, कन्वॉल्व विथ साइन टी अपॉन टी। ठीक, अब साइन टी अपॉन टी जो होता है वो सैम्पलिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेक्टेंगुलर का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ए रेक्टेंगुलर अगर टी अपॉन कैपिटल टी के फॉर्म में लिखा है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है। तो इसका होता है ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी अपॉन टू। ठीक है, अब इसी का अगर मैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगाऊं तो ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी अपॉन टू का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। ए इनफैक्ट 2 पाई ऑल्सो मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई ऑल्सो मल्टीप्लाई होगा, फिर ए और ये रेक्टेंगुलर एफ यानी यहाँ पे ओमेगा लिख लेंगे, टी को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा बाई टी। तो ये अगर आप इसको लिखोगे इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग तो ये आएगा 1/पाई स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा सैम्पलिंग ऑफ टी कन्वॉल्व विथ सैम्पलिंग ऑफ टी। तो इसको सैम्पलिंग के फॉर्म में लिखने के लिए ये ओमेगा को आपको पहले टी में रिप्लेस भी करना पड़ेगा, है ना। जब आप टाइम डोमेन में लिखोगे तो ये टी से रिप्लेस करोगे। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो आप दोनों को, इस सैम्पलिंग को, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो ए और टी है कैपिटल ए टी, इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कंपेयर होगा तो 1 हो जाएगा ए टी का वैल्यू। ठीक है, और साथ में क्या दिख रहा है, टी का कोफिशियंट t/2 ये भी 1 है। तो t/2 1 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ t की वैल्यू 2 है, और t की वैल्यू 2 आ गया तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू 1/2 है। तो a और t का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो यहां से सैम्पलिंग ऑफ t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो आएगा 2 पाई, a की वैल्यू 1/2 है, और रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा अपॉन टी, टी की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया, पाई रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाय 2। ठीक है, पाई रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाय 2। अब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो। ठीक है, इसका लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। सो टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी यू विल गेट एक्स ऑफ ओमेगा, जो कि आएगा 1/पाई स्क्वायर। जब आप इसको ले लोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पाई इंटू रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा पाई इंटू रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 से। ठीक है, तो यहां से पाई स्क्वायर, ये पाई और ये पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया, रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 और रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 से, क्या आना चाहिए रिजल्ट, ओमेगा बाई 2 मतलब विड्थ इसका 2 है। टी कितना आया था देख लेते हैं एक बार, T2 आया था, यस ओमेगा बाई 2 है, तो यहां से -1 से 1 तक ये आपका रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 में बना रहा हूं, हाइट इसका 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा ना, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा रेक्टेंगुलर ओमेगा बाई 2 ही आने वाला है, तो यानी कि रेक्टेंगुलर ओमेगा बाई 2 ही आ जाएगा। तो तुम्हारा y ऑफ ओमेगा रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 आ गया। ठीक है, यानी कि यही आ गया सेम रिजल्ट। अब रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 2 का 1/पाई सैम्पलिंग टी होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स
फोरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ टी कितना हो जाएगा 1/पाई, है ना, यहां से निकाल लो। ये देखो ये रेक्टेंगुलर ओमेगा बाई टू का फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/पाई सैम्पलिंग टी, तो 1/पाई सैम्पलिंग ऑफ टी, और 1/पाई सैम्पलिंग को क्या लिख सकते हैं साइन टी अपॉन टी। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा वाई टी का, ट्रायंगुलर नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे कन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जो ट्रायंगुलर होगा दो रेक्टेंगुलर पल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन टी अपॉन पाई टी, दैट विल बी अवर आंसर। साइन पाई टी अपॉन पाई टी, so साइन पाई टी अपॉन पाई, साइन टी है ना, साइन टी अपॉन पाई टी, यस, साइन टी अपॉन पाई टी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। That this is a direct answer here. There is no need to explain it. If you know the property of LTI system, and in Fourier transform and in the Z transform we generally use, or in the Laplace transform also we use this type of function. What is the eigen function? The direct relation you should know, that what there will be a one signal by which if you transmit the signal you just need to multiply it with the Z transform or the Laplace transform, like that. So here we say that if there is an LTI system and input, and here the h of t is given, then the output you can directly calculate by calculating h of omega e to the power j omega naught t, if the input is also exponential. Okay, if the input is also exponential, then LTI system, we can just calculate the output by calculating the h of omega at that particular frequency, and at omega equal to omega naught, then you will get multiply with the input only. You just need to multiply with the input after calculating it with the Fourier transform or the transfer function at omega equal to omega naught. So answer is e to the power plus j omega naught. Now try answering this question.
Venkatesh Joshi has got the answer as B. Why the answer is B? Can you tell me? We can calculate the Fourier series expansion for a periodic signal. So first of all, we have to find that out of these four options, which one is periodic and which one is not. Okay, so let's calculate 2 cos t, 3 cos 3t. So xt is equal to 2 cos t and 3 cos 3t. Then for this particular signal, the t1 you can calculate. This is 2 pi by omega of 1. So 2 pi divided by 1. So here you are getting 2 pi. For this you will calculate t2. So 2 pi by omega 2. It is 2 pi by 3. Now calculate the ratio. So you will get 2 pi divided by 2 pi by 3. So 3 is a rational number. So if it is rational, hence xt is periodic. So if it is periodic, then we can expand its Fourier series. It can expand using the Fourier series. So this is option number A. Let's calculate option number C. Cos t and 0.5. Now this is cos t plus 0.5. So this is the DC signal. It will not affect the periodicity. So what about this? So this is cos is also a periodic signal. Okay, the cos is always a periodic signal with the time period 2 pi by omega. So that is 2 pi by 1. So the time period is 2 pi. Okay, so this is also periodic. Now coming to the option number D. So option number D says 2 cos 1.5 pi t and 3.5. So 2 cos 1.5 pi t and sine 3.5. So for this T1 is equal to 2 pi by 1.5 pi. So it is 4 by 3, and for this T2 is equal to 2 pi upon 3.5. It should be pi, na? Yes, it is pi. So pi and pi will get cancelled and we will get 4 by 7. So now if I calculate the T1 upon T2, this is 4 by 3 and 4 by 7. So we are getting 7 by 3. It is a rational number. So all these three are periodic signals. So option B should be a periodic. Let's check that. So the T1 is equal to 2 pi upon pi. So we will get 2, and this T2 is equal to 2 pi upon 1. We get 2 pi. So when we calculate T1 upon T2, we are getting 1 upon pi, which is irrational because it is depending upon the pi. So it is irrational. So this is aperiodic. So it is asking that for which one of the following we cannot represent the Fourier series. So for aperiodic we cannot represent the Fourier series. So option B is the right answer. Yes, correct, correct, Venkatesh. Now solve this.
This is something which we discussed related to the Eigen. Yes, guys. So now let's solve this question. Come on, guys. Quickly tell me what is the answer. So here you can see that this is the same question like a eigen function. So let's discuss that in some different approach. So we have the h of s. So it is given as e to the power s plus e to the power minus s. So if you will write in terms of omega, so it is e to the power j omega and e to the power minus j omega, which can be written as 2 cos omega. Okay. Now the input is we take the 2 cos 3 pi t. This is 2 cos 2 pi by 3 t. So if I take the input as 2 cos 2 pi by 3 into t, so it is also acting as a eigenfunction because it can be represented in terms of exponential. So what is the output here correspond to this? The correspond to this, the output will be 2 cos 2 pi by 3 into t at multiplied with 2 cos omega at omega equal to 2 pi by 3. So this is 2 cos 2 pi by 3 into t
into 2 cos 2 pi by 3. 2 pi by 3 means 120, so it is minus 2 cos 2 pi by 3 into t. Okay? Yes, 120, so minus 1 by 2, so 1, 2 and 2 will get cancelled, minus and you will get. Similarly, you will perform for x2. x2 is what? x2 is minus, already minus sign, so cos pi t let's take. Okay? So that is, take, this is cos pi t. Now, y2t we can calculate. So what is that? The cos pi t multiplied with h of omega, that is 2 cos omega at omega equal to pi. So cos pi is also minus 1, so this is minus 2 cos pi t. So the output will be yt equal to y1t minus y2t. So here you are going to get minus 2 cos 2 pi by 3t, minus minus become plus 2 cos pi t. Okay, so now we want to calculate the C3. C3. Okay, is it correct up to this point? Are you able to get this? Minus 2 cos pi t plus 2 cos pi t we are getting. So the time period you can calculate. Okay. If it is periodic, then only you can represent it. See, because we want to represent it in terms of the exponential Fourier series. What is the expression for the exponential Fourier series? The exponential Fourier series says any signal which is periodic, let us say x of t, then it is summation n equal to minus infinite to infinite cn e to the power plus j n omega naught t. So we have to represent it in terms of omega naught. Okay, so now if you say for this function, let us suppose, what is the time period? So let us suppose this t 2 pi by omega, omega is 2 pi by 3, or you can just do the reverse with 2 pi by omega, so the time period is 3. Here directly you can say the time period is 3. The time period is 3. So this is your omega naught. Okay, so 2 pi by 3 is your omega naught. So you can write minus 2 cos of omega naught t, and here it is 2 pi by 2. So the time period here will be 2. The time period here will be 2. So 2 pi by omega naught. So you can write this as cos of 2 pi by 2. So this is also omega naught, but we need a 2 omega naught, right? We have got a 2 omega naught now. One time period you will get 3 and another time period you will get 2. So the overall time period will be 6. Here the overall time period will be 6 only. Okay, this is T naught, let us say T2, and this is T1. So both the signals are in the difference form. So it has the time period 3, it has the time period 2. So overall time period will be the LCM of these two, T1 and T2. So it is 6. So the time period is 6. So in this way you will write 2 pi by T naught, that is pi by 3. Okay. Are you getting this point? So once you get it, then you can write it as minus 2 cos 2 omega naught t and 3 omega naught t. Okay, now you can write it as yt is equal to minus 2 cos, here you can write this 3 is the pi by 3 is the omega naught, na? So 2 omega naught t. So this is 2 omega naught t plus 2 cos, here we have got pi only. So omega naught you want to write. So 3 omega naught only you have to write. So this is 3 omega naught. Okay, and we want to write the value in terms of C1, C2, C3. So you need to expand it. So minus 2 e to the power j 2 omega naught t plus e to the power minus j
or let's write in this way. 2, there is already 2, so we don't need to write it. Okay, so now you can write minus e to the power j 2 omega naught t minus e to the power minus j 2 omega naught t plus e to the power j 3 omega naught t plus e to the power minus j 3 omega naught t. This is your y of t. And you need to compare because y of t is summation n equal to minus infinite to infinite cn e to the power j n omega naught t. This is this value, the whole term again. Now, if I am asking for n equal to 3, then only we will get C3. So, C3 is e to the power j 3 omega naught t. So, where you are getting this term, this is you are getting. So, the coefficient of C3, this exponential term is 1. So, C3 is 1. So, C3 you are getting as 1. So, answer would be. Now, try to answer this question. What is that? So minus 5 n u of minus n minus 1. So we have h of n is minus 5 to the power n u of minus n minus 1. And we are saying that what is the z transform of this and whether the system is stable or not. So, first of all, what is the definition for the Z transform? To calculate the Z transform, the definition is summation n is equal to minus infinite to infinite h of n z to the power minus n. Okay. Now, because it is u of minus n minus 1, so it will start from n equal to minus 1 to minus infinity minus 5 to the power n, and because we have already taken this, so this is z to the power minus n. Or you can also write it as summation n equal to minus 1 to minus infinity, minus sign outside, then it is 5 z inverse to the power n. So this is when you put n equal to 1, you will get 5 z to the power minus 1 to the power minus 1 plus 5 z to the power minus 1 to the power minus 2 plus 5 z to the power minus 1 to the power minus 3 and so on.
Okay, so this is minus 5 z inverse upon 1 minus 5 z inverse. Okay, this we will get. Now if we solve this, this is when we divide it by 5 z inverse, suppose, so we will get 5 z inverse minus 1, or you can also write it as minus 1 upon z into z minus 5, because this is 1 by z. So okay, let me write it in the this way, 5 upon z minus 1. Okay, now when you will solve it and also multiply it with the minus sign, so you will get z upon z minus 5. Okay, so the transform, the z transform would be h of z is equal to z upon z minus 5. That is clear. Now, whether this is stable or not, because here the n is a negative, so the system will be stable because it is the left-handed. Okay, so we will say that this is the left-sided sequence. Okay, this is the left-sided sequence. Then what is that? Mod of z should be less than the pole, that is 5. Mod of z less than the pole 5. So this is minus 5. So you will draw the circle, and because it will be inside, this is the 5. This is the j omega axis, not j omega. Let's take the real part and imaginary part of j z. The ROC includes the unit circle. Okay, the ROC includes the unit circle, hence this will be stable. This is the unit circle. Okay, this is the unit circle, and ROC is including the unit circle, hence it is stable. So it is stable because the ROC is including the unit circle. So answer will be z upon z minus 5, and the system is stable. In the following network, the switch is closed at t equal to 0 minus, and the sampling starts from the t equal to 0. The sampling frequency is 10 Hertz. Then the samples are given by. So I will give you the hint for this question, because if you will see this part of the question here, this part, this is forming a RC high pass filter. And what is the transfer function for high pass filter? This is H of S is RCS upon 1 plus RCS. So you can write S upon S plus 1 upon RC. So S upon S plus 1 upon RC. So let's multiply R and C. So we will get 10 into 10 to the power minus 6 into 200 into 10 to the power 3. So it will all cancel and we will get 1. So we will get S upon S plus 1. So the transfer function of this is S upon S plus 1. Okay. So the transfer function of this is S upon S plus 1. Input is X of S, which is a DC signal. So we will take 5 by S. Then what will be the output? Okay, so the output is Y of S is H of S multiplied with X of S,
we have got s upon s plus 1 and x of s is 5 by s. So we are getting this 5 upon s plus 1. So this is your y of s. And taking the inverse Laplace, we will get y of t equal to 5 e to the power minus t ut. And you are sampling at the sampling rate 10. So we know that we have to replace t is equal to nfs, and n upon fs is given na, fs is 10, so we have to replace it by 10n. So this is 5 e to the power minus 10n. So 5 e to the power minus 10n. Sampling frequency nts, sorry, nts. It is not nfs, it is actually nts. So we will get nts and n upon fs. So we will get 0.1 n. So we have to replace it by 0.1 n. So 5 into e to the power minus 0.1 n. 5 into e to the power minus 0.1 n. So is there any term I missed? 5. 5 is already there. I don't think that I missed anything. Let's see. Tell me if I missed anything. Come on. Come on, guys. Where is the mistake? Chalo, let's tell. Let's discuss that mistake, and then we will finish up this session because it is already uh, 5:30. We are going to, I am going to have one more session. So I will have to end this session first. Am I get the right? Am I have the right answer? Actually, I think the R and C when I calculated, there is some mistake. What do you think? 1 upon RC. Yes, exactly. So when I calculated the 1 upon RC, this is 2 which I missed. Na? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is 2. Actually 1 upon RC is 2. So 1 upon 2. So S upon S plus 0.5 will come. So it is S upon S plus 0.5 will come. Okay. So this is 0.5 will come and S upon S plus 0.5 will come. So it is the, when we put e to the power minus 0.0 minus 0.5 t will come here, and then when I will put this t, so 0 point, let me write it again, y of t will be 5 into e to the power minus 0.5 t ut. Okay, and now you change it e to the power minus 0.5, replace the t to write the y of n, replace this 0.1 n u n. So it is 5 e to the power minus 0.05 n. T is equal to 0.1 n. So that will be our answer. This one, option B. Option B would be the right answer for this question. Okay. So thank you for watching this session, guys, and don't forget to join our crash course. Here you will see this is the calling number. Here you can get the detail of this course, when it will start, when it will finish. You can enroll and download the BYJU'S exam prep app to get the free sessions also. And this is my Telegram group. Join this Telegram group, and the link is given in the description for downloading the BYJU'S exam prep app. Thank you for watching this, and let's meet with the next PYQ session of communication. Okay, PYQ of communication we will start around on 12 or 13. Then we will meet again with the PYQ series of IISc Bangalore. Thank you.